Hi, so today we'll be doing the analysis of sociology optional paper of UPSC CSC 2025, and today we'll be doing analysis of paper 1. So let's get started. This is the syllabus of paper 1. Let's get to the questions. Question 1 A part, what is common sense? Common sense क्या होती है? How are common knowledge and sociology related to each other? Explain. Common sense क्या है? Common knowledge और sociology में क्या relation है? हमें वो बताना है, and then we have to obviously explain it. B part says what is the relationship, similarities as well, differences as well between sociology and history in terms of their area of study and methodology. It simply means basically हमें sociology between what we have to do is we have to tell the similarities and differences between sociology and history in context to area of study and methodology. Okay, what is variable? Variable is again a topic of research methods and analysis. What are the different types? Different types क्या होता है? Elaborate करना है. Can Merton's reference group theory be relevant in understanding identity making in digital world? Explain. क्या जो Merton की जो theory है, the theory given by Merton of this reference group, your reference group की theory है which is given by Merton, is it relevant in understanding identity making in digital world? And we have to explain about that. E part says this social stratification theory gender blind, elucidate. Just social stratification की जो हमारी theory है, basically we have three perspectives. We have the perspective of structural functionalist, we have the perspective of Karl Marx, and we have the perspective of Max Weber. So it says कि जो भी theory, जो भी हम perspective पढ़ते हैं, is it gender blind? Yes or no, we have to elucidate, मतलब उसको explain करना है क्या चीज है वो, कि क्या वो gender blind है according to you or not. Moving on to question B, A part, what is positivism? Positivism क्या है? Critically analyze the major arguments against it. Positivism क्या है हमें ये बताना है, then we have to write the criticism. That is what critically analyze is. B part says highlight the main features of historical materialism as propounded by Marx. Historical materialism theory है which is given by Marx, हमें उस theory के main features we have to write about that, and how far is this theory relevant in understanding contemporary societies. Contemporary societies मतलब आज की societies. Okay, so till now how many thinkers we have? We have Robert Merton की theory of reference group पे question आया है. कार्ल मार्क्स की जो theory है about historical materialism उस पे question आया है. C part, what do you mean by reliability? Again a question of social research. Discuss the importance of reliability in social science research. Again a question of research methods and analysis. Moving on, question 3 A part, compare capability deprivation approach with that of social capital deprivation in understanding chronic poverty. हमारे पास capability deprivation approach, this is one part. Next we have social capital deprivation, this is another approach, and we have to first compare both of these approaches, and with help of these two approaches we have to basically understand what? We have to understand chronic poverty. This is what the question says, simple. B part is, are pressure groups, again a question of what? Politics and society. It is the first question from politics and society. It says, are pressure groups a threat to? Threat है कि necessary element है democracy की. Democracy के लिए क्या जो pressure groups है, are they a threat or is it necessary? It is a necessary element for democracy. We have to explain about that with suitable illustration, suitable examples. C part says, what is hypothesis? Again a question of social research, research methods and analysis. It says critically evaluate the significance of hypothesis in social research. Okay, moving on, question 4 A part, give an account of recent trends of marriage in the Indian context. How are these different from traditional practices? Recent trends क्या चल रहा है? For example, living relationship चल रहा है, एक बहुत चीजें चल रही है marriage के context में, तो especially in India we have to talk about Indian context, right? And how are these different from traditional practices? Traditional practices क्या? For example, polygamy होती थी, जो traditional forms of marriages होते थे, classical types of marriages होते थे, we can mention about that. And what we have to do is हमें ये बताने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो मतलब इन कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे वो कैसे डिफरेंट है विद द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ मैरिज इन इंडियन कंटेक्स्ट, राइट? बी पार्ट इज व्हाट वुड यू आइडेंटिफाई एज its similarities and differences in the elite theories of Moshe, Michels and Pareto. Means all these three thinkers have given their theory, they have given their perspective in context to elite theories, and what we have to do is we have to tell the similarities between the theories of these thinkers and the differences as well.
Okay, C part says critically analyze the sociological significance of informal sector in the economy of developing societies. जो informal sector है उनका हमें sociological significance बताना है economy में, मतलब कहाँ की economy में बताना है, developing societies जो developing countries है, developing societies है, वहाँ पे हमें मतलब उनके economy में we have to tell the social significance of informal sector. Okay, moving on, question 5 A part, in what way is the scope of sociology unique? Scope of sociology जो है unique कैसे है, we have to explain that. ठीक है. Then B part says does the structural function is perspective कहाँ पे, social stratification, और social stratification promote a status quo. Give reasons for your answer. Status quo क्या होता है? Status quo is basically society है हमारे पास, society में जिसका भी domination चल रहा है in future society में उसी का domination चले, यही होता है, मतलब it basically maintains the domination of either the group or the individual or any institution. ठीक है, तो वही उसी का डोमिनेशन चलता रहा in future also. That is what status quo. They do not want to change. C part says do you think that the formal workspaces are free of gender bias? Argue your case. जो formal workplaces होते हैं, जो proper organization, proper sector होते हैं, क्या वो जो workplaces are they free from gender bias? क्या वहाँ पे लड़का लड़की पे difference नहीं होता? This is what the question is. We have to argue our case. We can write the examples, the case studies, etc. D part says how does Weber's Verstehen address the objectivity? पहला point. Second, subjectivity debate in sociology. So again, next thinker that we have is Weber. So we have Robert Morton, then we had Karl Marx, and third thinker that we have is Weber. Okay, moving on, to what extent can education and skill development be an agent of social change? Critically analyze, which means जो भी social change होते हैं society में, to what extent उसमें education और to what extent उसमें skill development का role रहता है, और in other words you can say education और social development किस extent तक influence करते हैं social change in society, right? Okay, moving on to question 6A part, what is science? Science क्या होती है? Next, do you think that the methods used in natural sciences can be applied to sociology? Give reasons for your answer. तो like the question says कि पहली चीज तो साइंस क्या है, दूसरा पार्ट सेज कि क्या तुम्हें लगता है जो भी मेथड्स हम नेचुरल साइंसेज में हम यूज करते हैं, क्या वो सारे मेथड्स हम सोशियोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. सो द आंसर इज यस, बिकॉज फॉर एग्जांपल वी यूज एक्सपेरिमेंटेशन, वी यूज ऑब्जर्वेशन, हम वेरिफिकेशन यूज करते हैं इन साइंस. सो ऑल दीज 3 थिंग्स वी ऑल्सो यूज इन सोशियोलॉजी. देयर आर मेनी मोर बट फॉर नाउ दिस इज इट. इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में विल टॉक लेटर, बट फॉर नाउ कि हाँ ये सब चीजें हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं. वी अप्लाई ऑल दीज थिंग्स. हम एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं? सोसाइटी पे करते हैं. ऑब्जर्व किसको करते हैं? सोसाइटी में करते हैं, ग्रुप्स को करते हैं. देन वेरिफिकेशन, जो लॉज होते हैं वो हम वेरीफाई कर सकते हैं, राइट? यूनिवर्सल भी होते हैं, प्रिडिक्टेबल भी होते हैं, प्रिडिक्शन इज ऑल्सो देयर. सो यस. Okay, moving on, B part, what do you understand by gender-based domestic division of labor? Is it undergoing a change in the wake of increasing participation of women in formal employment? Clarify or answer with illustration. It says जो भी gender-based domestic division of labor होता है कि कुछ काम फीमेल्स ही करेंगे, कुछ काम मेल्स ही करेंगे. जैसे फीमेल्स खाना बनाएंगी, फीमेल्स शी विल डू दी हाउस होल्ड कोर्स, मेल्स क्या करेंगे? बाहर जाके दे विल अर्न मनी. ऐसा पहले डिविजन ऑफ लेबर था, राइट? अभी भी बहुत टू वेरी गुड एक्सटेंट अभी ये चीज है, इट एग्जिस्ट. तो इट सेज कि हैज इट, पहले तो चीज ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, हमें ये समझाना है. सेकंड पार्ट सेज इज इट अंडरगोइंग अ चेंज इन द वेक ऑफ इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट. सेज कि जो विद अवेयरनेस इन पीपल, जैसे जैसे एजुकेशन ऑफ वुमेन, इट इज गेटिंग पीपल, फीमेल्स आर गेटिंग एजुकेटेड, वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड, वो जाके बाहर काम कर रही है इन फॉर्मल सेक्टर्स. तो क्या उसकी वजह से कुछ भी चेंज आ रहा है इस जेंडर बेस्ड डिविजन ऑफ लेबर में? दिस इज व्हाट द सेकंड पार्ट सेज. एंड थर्ड इज क्लैरिफाई और आंसर विद इलस्ट्रेशन. हमें एग्जांपल देके, इलस्ट्रेशंस देके, एग्जांपल देके अच्छे से क्लियर करके समझाना है. C part says how can you assess the significance of social movements in digital era? It says social movements का significance हमें बताना है कहाँ पे? डिजिटल एरा में social movements का significance बताना है. Okay, moving on to question 7A part, what is sampling? This is again a question of research methods and analysis. Discuss the different forms of sampling. Different forms बताने sampling के with the relative advantages and disadvantages. We have to quote both. We have to quote both the advantages as well as the disadvantages of sampling. B part says how do theories of Marx, Karl Marx, Weber, Max Weber and Emile Durkheim differ in understanding religion? Explain. जो मार्क्स का पर्सपेक्टिव है रिलीजन को लेके, वेबर का जो पर्सपेक्टिव है रिलीजन को लेके, जो डर्कहाइम का
पर्सपेक्टिव है रिलीजन को लेके, वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 3 पर्सपेक्टिव्स. इन सारे थिंकर्स का जो पर्सपेक्टिव है, वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रिलीजन के ऊपर. Okay, C part says, so yes, we have Robert Merton, then we had Karl Marx का historical materialism, फिर हमारे पास आते हैं मैक्स वेबर, और फिर हमारे पास एक ही क्वेश्चन में 3 थिंकर आ जाते हैं, that is Karl Marx, we have Karl Marx, we have Max Weber, we have Emil Durkheim. Okay, moving on, question 7C part, what is the nature of relationship between science and religion in modern society, analyzed with suitable examples. It says, हमें साइंस और रिलीजन के बीच का जो रिलेशन है, हमें वो समझाना है कहाँ पे, इन मॉडर्न सोसाइटी, इन मॉडर्न वर्ल्ड, विद सुटेबल एग्जांपल्स. ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 1A पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज प्रपोज्ड इन यूएनडीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2015. पहला पार्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, दूसरा पार्ट जो यूएनडीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो रिपोर्ट था 2015 का, उस रिपोर्ट में दे हैव मेंशन्ड द एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यहाँ पे हमें वो डिस्कस करना है. सो दिस क्वेश्चन, यस वी कैन डू इट, क्योंकि हम इसे जीएस में पढ़ते हैं, बट अ लिटिल आउट ऑफ बॉक्स, बट यस वी कैन do this question, we can write this answer. B part says, how do civil society organizations such as NGOs and self-help groups, NGOs and self-help groups contribute to grassroots level in social changes. जो NGOs हमारे पास, जो self-help groups है, वो किस extent तक grassroots level पे social change लाते हैं, किस level तक हमें बिल्कुल grassroots level, बिल्कुल reality में help करते हैं social change लाने में, उनका contribution क्या होता है, we have to discuss about that. C part says, in what way does queer kinship challenge in traditional kinship system? By giving illustrations. Okay, so what we have to write in this question is कि हमें queer kinship और मतलब basically queer kinship कैसे challenge करती है traditional kinship system को, we have to explain about that. So this is it for question. This is it for paper 1 of sociology optional 2025. Thank you.